अब इसके बाद आफ्टर द एलोट्रॉपी कंसेप्ट इज ओवर, वी गो इनटू द नेक्स्ट कंसेप्ट और उसका नाम है ऑक्सोएसिड्स। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन, उसको ऑक्सोएसिड बोला जाता है। अब एसिड इट इज बिकॉज ऑफ H, तो वहां पर H होगा, एक ऑक्सीजन होगा। अभी हम लोग यहाँ पर ऑक्सोएसिड किसका कंसीडर करने वाले, सल्फर का। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज सल्फर। ओके, ऐसे 3 एलिमेंट्स होंगे। नाउ some of the most important ones I want to discuss with you. Generally what happens is the oxoacids of sulfur are going to be stable in the solution state or in the form of salts. Okay, इसी फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल है as compared to the pure form. Okay, तो कुछ important है, and the first one is called as sulfurous acid. Sulfurous acid, when you talk about, the formula of which is H2SO3. Okay, this is sulfurous acid, H2 and then we got SO3. अभी इसी को एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो we get sulfuric acid, and that will be nothing but like this, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4. ओके, नेक्स्ट वन इज वी हैव पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. What we are going to do in pyrosulfuric acid is remove this H and then take the mirror image of that, यानी HOS double bond O, ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा, and then we go for its mirror image like this. So this is pyrosulfuric acid. अगर आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहते हो तो 2 H है, 2 सल्फर है, और ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर गोइंग टू बी 7 ऑक्सीजन. सो दिस इज pyrosulfuric acid. उसके बाद वी गो इनटू पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. अब इसमें क्या करो कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक और O ऐड कर दो, तो व्हाट यू गेट इज पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. एक ही O ऐड किया हुआ है, तो जो फॉर्मूला H2SO4 है अभी वो फॉर्मूला हो जाएगा H2SO5. ओके, तो यहाँ पर एक पैरोक्सी लिंकेज आ गया. ओके, एक ऑक्सीजन जिसका 2 वैलेंसी होता है, तो उसमें से वन ऑफ द वैलेंसी सैटिस्फाइड बाय द अदर ऑक्सीजन, दैट इज अ पैरोक्सी ऑक्सीजन. तो यहाँ पे पैरोक्सी ऑक्सीजन आ गया. सिमिलरली वी हैव पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. तो उसके लिए क्या करो, ये H को निकालो एंड देन यू टेक द मिरर इमेज ऑफ दैट, कंप्लीट मिरर इमेज. सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीजन को नहीं कंसीडर किया था, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन को भी कंसीडर करने का है. When you are going to take a mirror image of this, so it is like this. Okay, now you take the entire mirror image of this. So यहाँ पर एक O आएगा, S double bond O and OH. तो अगर आप फॉर्मूला देखो तो it is H2, 2 H है, 2 S है, एंड ऑक्सीजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8. So it is H2S2O8. It is peroxy disulfuric acid. This is peroxy monosulfuric acid. It is also called as Carrow's acid. इसको बोला जाता है Marshall's acid. Okay, and in this case also there is a peroxide linkage. Okay, तो बाकी के सब में तो oxide linkage है, लेकिन इधर in these acid there is peroxide linkage. Similarly, there is one more important oxy acid, and that is called as thiosulfuric acid. Okay, thiosulfuric acid, and it is formula is like this, and double bond O. Okay, so this is the formula for thiosulfuric acid, और उसका जो formula होगा वो है H2 S2 and O3. 2 H 2 S and 3 ऑक्सीजन है, so it is H2 O3. It is thiosulfuric acid.
ओके, अब सब जगह अगर आप देखो खासियत ये है कि ये जो अंडरलाइन है वो 2 H कैन बी रिप्लेस्ड एवरीवेयर. ओके, the 2 H can be replaced, this as well as this. So they are all dibasic acid. Okay, they are all dibasic acid except peroxy monosulfuric acid. Okay, it is nothing but it is monobasic. तो ये आपको याद रखना है. अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे सर, इधर तो 2 H है तो 2 H चला जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा the H which is attached to the oxide oxygen is released in the form of H plus and that is responsible for acidity. ये बात भूलिएगा मत. तो यहाँ पे सब जगह जो भी मैंने अंडरलाइन H किया ना वो जरा गौर से देखिए, तो जो अंडरलाइन H है वो ऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. लेकिन जब हम पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ये देखो ये वाला H मैं यहाँ पे ब्लू से कर रहा हूँ अंडरलाइन तो आपको समझेगा. ये जो H है ये H इज ऑलराइट, ओके, दिस इज अटैच्ड टू ऑक्साइड ऑक्सीजन. लेकिन ये जो H है इट इज अटैच्ड टू अ पेरोक्साइड ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड ऑक्सीजन से अटैच हुआ वाला H अगर वो टूटता भी है तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी डिनोटेड एज और इट इज बीइंग डोनेटेड एज H, नॉट H प्लस. ओके, वो एक हाइड्रोजन एटम के तौर पे वो बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन एटम के वजह से एसिडिटी नहीं होता है. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स दैट एसिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल. तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ही H प्लस रिलीज होगा एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वेल मोनोबेसिक एसिड. ओके, सो ये बात आपको अब भूलना मत प्लीज. सो कैरोस एसिड और द पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड, अदरवाइज ऑल ऑफ देम आर डाइबेसिक एसिड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. My dear friends, once we understand the oxyacids of sulfur, we now go into halogens. Okay, so oxoacids of halogens. Now the points which has to be remembered about this particular concept is, number one is there are only few of them which are going to be very stable in the pure state. That is HF, HClO4, HiO3 and H2IO6. Okay, this is hypofluorous acid. This is perchloric acid. This is iodic acid and this is metaperiodic acid. Okay, only these are going to be what considered as stable in the pure state. Otherwise, all the others are going to be stable in the form of salts or in the form of solutions. Okay, that is what you need to keep in mind. Okay, now next part is I'll give you a tabular form of the oxyacids of halogens. क्योंकि दोस्तों हम halogens की बात करते हैं तो एक एलिमेंट नहीं है. जैसे मैंने आपको ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर बोला था तो उसमें एक ही एलिमेंट था सल्फर का ऑक्सो एसिड. लेकिन यहाँ पर जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 4 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एज वेल एज आयोडीन. ओके, सो लेट अस कंसीडर ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, सो यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. The first column is the oxidation state of the halogen. Okay, next one is the name of the oxo acid. Okay, then we talk about hypohalous acid. Next we have halous acid. Next we have halic acid. And the next one we have is perhalic acid. Okay, these are the different types of oxyacids. So, we talk about under the first case now, for say fluorine, chlorine, bromine as well as iodine. So fluorine has got only one, that is HOF. Chlorine, it has HOCl, HOClO, HOClO2 and HOClO3. Bromine has HOBr,
HOBrO2 and HOBrO3. Similarly for iodine also it is HOIO2 and HOIO3. Okay, so these are the different ones. Now when you consider the oxidation state of the X, so under the hypohalous acid the oxidation state of X is going to be +1, this will be +3, this will be +5 and this will be +7. This is the oxoacids. The entire table now you come to know about it. Okay, so now I'll give you the individual names so that you can remember where. Hypofluorous acid, this is hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, perchloric acid. Hypobromous acid, bromic acid, perbromic acid. We don't have bromous acid. Hypoiodous acid, we don't have iodous acid. Then we got iodic acid, HiO3, so this HiO3, and then we have got HOIO3, and that is called as periodic acid. Alright, so these are the different oxoacids of halogens. Okay, and remember that in this oxoacids of halogens, the halogen shows a positive charge. Okay, always remember two important points. Number one is generally the non-metals are going to form oxoacids. Okay, and the second point is, okay, in that particular oxoacid the non-metal will show a positive charge. Alright, so it's like sulfur, it's like fluorine, chlorine, bromine, iodine, they are considered as non-metals and they show oxyacids, okay, and they show a positive charge in that particular oxoacids. So I hope you have understood this with respect to this particular table, the different types of oxoacids formed by halogens. Now, my dear friends, here the important point which I want to say about the oxoacids is, I'll take an example of fluorine. अभी आप पूछोगे क्यों? Reason बहुत simple है, वो tabular format में जो मैंने आपको explain किया उससे आपको clear हो जाएगा कि क्लोरीन एकमात्र ऐसा halogen है जो चारों प्रकार का oxoacid बनाता है. ओके, तो इसलिए शुरू करते हैं. HOCl, फिर है HOClO, फिर है HOClO2 और फिर है HOClO3. मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, यहाँ पर है +3, यहाँ पर है +5 और यहाँ पर है +7. Okay, because it's simple, because every oxygen has the charge of what? -2. H का charge is +1, so -2 and +1 is -1, so this has to be +1. वैसे यहाँ पर सब जगह ये -1 हो जाएगा, OH जिधर है वो -1 और ये ऑक्सीजन है तो -3 हो गया, तो इधर +3 होगा, इधर भी देखो -1, -2 is -4, so -4 and -1 is -5, तो ये +5. इधर देखिए OH का चार्ज -1, 3 ऑक्सीजन का -6, तो -1 -6 is -7, तो क्लोरीन का चार्ज +7. ठीक है, सो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस, द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. ये बात याद रखिएगा. सो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ द एसिड स्ट्रेंथ. Okay, it will be like this. तो ये वाला जो होगा that is a weak acid और ये जो होगा that is a strong acid. Okay, so perchloric acid, in fact I'll tell you for your information, it is the strongest mineral acid ever known. Okay, and this hypochlorous acid is considered to be the weak acid. Okay, तो ये बात याद रखिएगा. अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो स्ट्रक्चर्स में what we say is, when you talk about HOCl, HOCl ऐसा है. अब देखिए दोस्तों, Cl के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है. Okay, in the outer motion, it's an halogen. So 1 electron it is used for formation of bond with oxygen. So there are still 6 electrons remaining. 6 electrons मतलब 3 pairs. तो ये 3 lone pair आ जाएंगे उनके ऊपर. ओके, अभी आप देखो कि जैसे हम हाइपोहालस एसिड से परहालिक एसिड की तरफ जा रहे हैं, एंड इफ यू कैन फाइंड आउट द चेंज एज फार एज द केमिकल फॉर्मूला इज कंसर्न्ड, यस, there is an addition of oxygen. Now that oxygen which is going to be added is getting added to whom? Chlorine. See, check it out. Okay, ये जो oxygen add हुआ है chlorine को, यहाँ पर भी oxygen added is chlorine. So what is happening is कि as we go from a hypochlorous acid to the perchloric acid, alright, one lone pair is getting converted into what? Bond pair. So we have a structure like this, HOCl, double bond oxygen, क्योंकि आपको मालूम है oxygen का valence is 2. सो एक जोड़ी बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है और वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. सिमिलरली
यहाँ पर अभी डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर अभी एक ही लोन पेयर है और लास्ट में HOCl डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड। Am I clear with this? So as what happens is that the oxygen gets added to chlorine, the electron density gets shifted on the other side and therefore the O and the H bond becomes weaker and weaker. और यहाँ पर the bond is very weak, so it is breaking very easily and it releases H plus ions. And the one which releases H plus ions very fast is called as a strong acid and therefore perchloric acid is a strong acid. Okay? तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे 1 लोन पेयर और यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है. Okay? This is what the structure of the oxoacid of halogen, या फिर I specifically say about chlorine. Okay, and I hope you have understood the concept of oxoacid now with respect to the sulfur that is belonging to group 16, and then we talked about with respect to halogens.